हेलो एवरीवन, आई एम प्राची आचार्य। आज मैं आपके लिए ट्रस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट। बिहार मेंस का भी बैच चल रहा है टारगेट फॉर आईक्यू पे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे उसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं एंड दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट के बारे में एंड ट्रस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एसआरए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रस्ट, इक्विटी एंड एसआरए। ठीक है, तो अभी हम ट्रस्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट को डिफ़ाइन करना वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट अफेयर एंड डॉक्टर हैनबरी के वर्ड्स में तो ट्रस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड इफेक्टिवली। व्हाट कुड बी बेस्ट डन कि आप ट्रस्ट को अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से, बेलमेंट से, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लेफ्ट आउट थिंग एंड दैट वुड बी ट्रस्ट. So this is something which Dr. Hanbury said. Now let's understand first of all what is trust. Trust is basically here as you can see on the board. A, who is supposedly the owner of the property, who is known as author of trust in Indian law. Section 3 of your Indian Trust Act 1881 talks about author of the trust and the definition of trust per se. So, author of the trust is basically the owner of the property. He transfers the property to B, who is known as the trustee. And this property which is given to the trustee, property is held with B, that is who is known as the trustee, and trustee on the basis of conscience. And again, when I'm using the word conscience, it is different in different laws, and when we see the historical development, you will understand why I'm saying conscience word is different in different laws. So basically in Indian law, if you come to Indian law, trustee manages the property or administers the property for the benefit of C, who is actually the real owner, or the beneficial interest in the property of A is being actually transferred to C, who has equitable state under English law and who is known as beneficiary in the Indian law. So this concept and this arrangement of trust has been derived from English and Roman law. There is a whole lot of debate whether it has been derived from English law or Roman law. Many people say that it has been derived from English law. Many say that it Roman concept, it is a Roman concept and has been first described and observed in Roman law. So that is a different state of affair. But in English law, what used to happen, that trust and this arrangement, because B does not have any interest in this transfer, he does not have any kind of consideration in this whole arrangement, and that is why common law did not recognize moral obligation. So it used to be said that B has a moral obligation to keep the property for C's benefit. So this moral obligation was not enforceable in common law. However, Chancery courts and the judges and the lawyers of the Chancery court has developed certain theories and tried to recognize B's this arrangement, saying that B has actually legal estate and C in this case would be held equitable state. So trust is basically an equitable obligation, and it binds the conscience of the person who keeps the property with himself. That would be B in this case. So चांसरी कोर्ट ने इसको इन्फोर्स करवाने के लिए लीगल स्टेट एंड इक्विटेबल स्टेट का डिफरेंस, दो तरह का डबल रिलेशनशिप को बताया, और ये एक तरीका था कि ट्रस्ट को कैसे इन्फोर्सिएबल बनाया जाए। वहीं हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन रोमन लॉ। तो रोमन लॉ में क्या होता था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक फॉर एग्जांपल वुमेन कुड नॉट इनहेरिट और पॉस्थमस चाइल्ड कुड नॉट इनहेरिट। तो इसको सरपास करने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने ये तरीका ढूंढा कि एक लीगल एयर को अपॉइंट किया जाए, एक एयर को अपॉइंट किया जाए who काइंड ऑफ होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम,
एंड उससे ये प्रॉमिस लिया जाए कि आफ्टर सम टाइम ही गिव्स द प्रॉपर्टी और ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू द रियल बेनिफिशियरी। तो ये जो प्रॉपर्टी होता था इसको बोलते थे फिडे कमीशन। क्या बोलते हैं? फिडे कमीशन। जो लीगल एयर जिसको हम बात कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम बी की बात किए तो उसको बोलते थे फिड्यूशियरियस। The term has been derived from the word fiduciary, in good faith. So the person used to keep the property in good faith. And the third one, that is the real transferee who used to get the property, was known as fideicommissarius. So this was basically the historical development of trust law in English, Roman and Indian law. Indian law, we have a few examples of Hindu and Muslim law. However, we do not find any cumulative effect of this trust arrangement before the enactment of the Indian Trust Act. Thank you.